of time experience के साथ. Okay, so we're gonna start. Okay. बिल्कुल ऊपर करना, जेल भी नहीं ये. You know, this is Hello, Assalamu alaikum. We're just waiting for a few more candidates to join, and as soon as there are more people, we'll commence this session officially. So I hope you guys stay here with us, and we'll just start in 2 minutes. Hello, Assalamu alaikum. My name is Veerab and I'm part of the team for Kamai. So to introduce what Kamai is, we're a Lahore-based startup and we work towards making your hiring process faster, easier, and more reliable. Hamari ek series hai, it's called Career Conversations. So today we're commencing the 15th episode for that. The main aim behind Career Conversations is कि जो भी gap है between academia and the industry या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं which you just learn through experience. You can't know those things without having experienced them. So
In these specific career conversations, we invite इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और वो आके अपने एक्सपीरियंस से जो भी उन्होंने बातें सीखी हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं. सो द मेन एम इज़ कि अगर कोई हम किसी और की लर्निंग से कोई सीख सकता है तो वो सीख लें. So today's topic is the importance of soft skills for career progression. And iske liye we've invited somebody who's not only a part of the industry for over 12, 15 years, he's also been a part of academia for a very long time. So you can say कि उनके लिए ये चीज़ें identify करना बहुत easy हो चुका है because he's worked with it so much कि उनको already पता है कि क्या gaps आते हैं when fresh graduates especially think about entering into their professional life. So my guest today is Mr. Salman Nasir. Salman Nasir is currently a lecturer at the School of Social Sciences and Humanities at NUST. And he has also worked a lot for the industry. ये दोनों काम करते हैं, so which is why he's been the perfect guest for this specific session. So let's start by talking to Salman. What do you think, Salman, is, what do you think? What are soft skills? Why are they so important for us? First of all, thank you very much. Just gotta put yourself on and your voice also. Okay. Yeah. Thank you very much. So first of all, soft skills are essentially extension of life skills. They're very important because organizations जब भी hire कर रही होती हैं तो वो ये देख रहे होते हैं कि अच्छा आपने आपका 4 GPA है, you've done so many projects. What do you bring on the table? So these are those skills जिसके basis पे they can decide whether they should invest on you, whether they should hire you, and because eventually जब हम एक organization के point of view से देखते हैं, they have some objective which they want to achieve, and what they're trying to really do is कि they need the right people for that right job. So they need these extra skills. ये बड़े basic से skills. It's not like rocket science है कि ऐसे skills हैं जो आप acquire नहीं कर सकते या build नहीं कर सकते. This is mostly common sense stuff. But then it requires a certain level of practice, structure, जिसकी वजह से ये essential skills बन जाते हैं. And I will talk about these skills today with through different articles which I've studied, so that I can make more sense के where the market is going, what the market is talking about. As fresh graduates in operating in a very changing field in Pakistan, आप कैसे benefit कर सकते हैं? Or and eventually, how can you hack those skills? I mean, that's what we need to build as a community, as professionals, and especially as youngsters. Not me, but you guys, that you have to build them in the industry. Yeah, thank you. Okay, so I understand कि आपने एक presentation बनाई हुई थी. You wanted के because that's your philosophy, right? Yeah. When there's a visual behind what you're saying, it becomes easier for the audiences to pick that up. Yeah. So I'll let you share your screen and we can start with that. And if anybody has any specific questions, they can raise their hands. We would essentially answer all of your questions in the last 10 minutes. But if you have something that you want answered before, please feel free to raise your hand or mention it in the question and answers box. Thank you, Merib. Thank you very much. Let me just share my screen with you guys. All right, I have a presentation here, and let's do this. All right, go away. And all right, so presentation का मकसद primarily ये था कि थोड़ी सी बात हम structured कर सकें. It's very important कि हम जो discussion कर रहे हैं उसके अंदर से आपको पता चले कि West में क्या हो रहा है, आपके पास क्या opportunity है, and then soft skills को आप कैसे देखते हैं, and then I will share my experiences and then I will guide you accordingly based on your questions. So this is me, और मीरब ने मेरे बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कर दी हैं, but the only thing which he is not told, and I will take the opportunity here to just briefly talk about it, is basically I'm a design thinker. Now what a design thinker does is I find gaps in different practices, and then I talk to people, observe and communicate, and then I solve those problems. So as a design thinker, I talk about solving problems which normally people would just ignore. Organization की problems such as entrepreneurial mindsets होते हैं, turnover होता है, core values होते हैं. So that's where my area is, and now we'll just quickly move on to what I've done in my life. I've worked with these brands, and they have given me the opportunity, thank you to the Almighty Allah, that they gave me the opportunity to work for them, solve their problems, and they sometimes they keep calling me back, well, now what I do is I introduce my students, I send them they're equally good, they have the skills, they have the life skills and the soft skills, and they will be valuable assets to your organization.
पहली चीज हमें एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी सेट करनी है एट दिस पॉइंट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस या आप इस सेशन के अंदर क्या चाहते हैं या आपके ज़हन में क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आई वुड वांट दैट फ्रॉम द ऑडियंस if you have anything, or other than that, then we can just quickly jump on to the other side of this slide. Any questions at this point? अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है. This is not that kind of a session कि मैं participation के लिए कह रहा हूँ कि आप सवाल पूछें. But it's good to have a certain level of expectations. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता ये है कि when you walk in an interview, everybody has an expectation. एक candidate की expectation होती है कि उसको hire किया जाए. एक recruiter की expectation होती है कि वो best बंदा अपने लिए उठाए अपनी organization के लिए. So it's very important कि आप ना हर चीज को frame करके discussion के अंदर jump in किया करें. So, Meetup, do we have any? So, not a problem. That's all good. Generally, my expectation from this lecture is, if I can change one person's mindset that they need to invest into the future by investing into their skills, that's my only expectation. मेरी चाहत इसमें से यही होगी कि आप grow करें. So moving on, and I'll just quickly jump into reality of life. कि 24 घंटे के अंदर बहुत सारे second होते हैं, and we have a habit of wasting those seconds. Now, this is about, if you do the math, is 86,400 seconds in a day. Now, these are finite number of seconds. We waste them. How do we waste them in a day? We're all aware of them. We're scrolling down in our screens. We're looking at stuff. We're reading, we're not reading, we're checking what is happening, हम कोई वीडियो देख रहे हैं हम. और आजकल प्रॉब्लम ये है कि इसी टाइम के अंदर हम कंटेंट भी बहुत ज्यादा करें, हम मल्टीटास्क भी बहुत ज्यादा करें. एंड बिकॉज द होल टेक्नोलॉजी इन द वे द वर्ल्ड इज गोइंग नाउ कि हम सारे बड़े डीपली रूटेड हैं, we tend to develop skills which are useless, and then we need to have those skills which actually contribute not only to the organization, to yourself, to the society, and those are important. So again, ये वही टाइम है, मैं अपने बाकी लेक्चर्स में भी कहता हूँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को भी कहता हूँ. इनफैक्ट आई आल्सो टेल माय स्टूडेंट्स कि दिस इज द सेम टाइम दैट a rich man gets, this is the same time that a poor man gets, and this is the same time that a productive man or woman gets. तो आप इस टाइम को किस तरह स्पेंड करते हैं, that is important. And going through the different, मतलब मैं इंटरनेट के ऊपर इसके पढ़ रहा था, time management is the first thing that you need to be good at. That's what organizations want out of you. They are looking for an employee, and they're not really looking for an employee. They're looking for a partner. They are looking for an entrepreneur जो कि उनको join करे और time को best utilize करता हुआ उनकी problems को solve करे. और organizations की problems are very day to day. They want you to follow up. They want you to write emails. They want you to do some analytical कि अच्छा ये PowerPoint की presentation बना दो, ये Excel के अंदर ये calculations कर दो. And if you really look at it from that standpoint and from that point of view, it's simple stuff. And again, you get the same time to do this, and that's the problem really कि आप time को कैसे utilize करते हैं. तो अब मैं बड़ी basic से बात करूंगा कि skills होते क्या हैं. Skills को अगर हम define करें तो skill is the ability to do something well, या expertise. Now, ये वो वाली चीज है कि जब इसके ऊपर जब भी बात की जाती है तो skill के ऊपर ना बहुत debate होती है कि कौन सा skill useful है और कौन सा skill useless है. Skill के ऊपर जब मैंने थोड़ा सा delve किया और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि आपके ना दो किस्म के स्किल्स होते हैं. एक जो आप इनहेरिट करते हैं, सो फॉर एग्जांपल दोस आर कॉल्ड द कॉग्निटिव स्किल्स, और दूसरे स्किल्स वो होते हैं जो आप डेवलप करते हैं ओवर टाइम एज कि आप किस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कहाँ रहते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप गिलगित में रहते हैं तो बिकॉज इट्स अ माउंटेनस एरिया एंड इट्स अ वेरी टफ एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे जो आप स्किल्स एक्वायर करेंगे विल बी वेरी डिफरेंट. वहाँ पे माउंटेनियरिंग इज नॉट अ लाइक एन एड ऑन, इट्स अ डे, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. वहाँ पे ट्रैवल करना 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नॉट समथिंग मतलब बियॉन्ड के जनाब मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ. वहाँ पे हर बंदा ही 5 किलोमीटर चलता है. लेकिन अगर आप इसी तरह के इफ यू टेक द स्किल, अगर आप नीचे आते हैं, जैसे आप लाहौर में है, जैसे आप इस्लामाबाद में है, तो वहाँ पे स्किल शायद फर्क होगा. मतलब हो सकता है खाना खाना एक स्किल हो आपका कि मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट से जाके खाना खाता हूँ, so on and so forth. So that changes from place to place. So again, as I was saying, there are two kind of skills, and cognitive skills are the core skills जिसके ऊपर आपका ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है चीजों को, और इससे आपको चीजें याद रहती हैं, आप किसी एक चीज को रीजन करते हैं, how you pay attention to stuff. These are all cognitive skills. These can be developed over time, they can be improved over time, but these are the ones which you inherit, right? ये वो वाले स्किल हैं जो आपको आपके पेरेंट्स की वजह से भी मिलते हैं. जिस तरह कहते हैं जी, बच्चा बहुत ज़हीन है, ये नेचुरली गिफ्टेड है, ये टैलेंटेड आर्टिस्ट है. सो
in my view, and obviously I can be wrong, ये वो वाले skills हैं जो आपको मिलते हैं, विरसे में आपको मिलते हैं. ये वो वाले skills हैं कि जो आप थोड़ा सा अगर आप उसको मेहनत करें, थोड़ा सा आप उसको polish करें, so you can really enhance them. Now these are easy stuff. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते. Because I believe, in my viewpoint, because हम अलमिया की finest creation में से एक हैं, तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. We just have to try, and trying is the first cognitive skill जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें करते हैं. And then आप mimicry से सीखते हैं, आप observation से सीखते हैं. तो cognitive skills is that first bar जहाँ से आप चीजें pick करते हैं. Now I'll structure this into a way कि आपको और चीजें समझ आए. Next skill, set of skill are the non-cognitive skills. Now these are the skills जो कि आपके behavior से derive होते हैं. Now ये आपकी so for example इसके अंदर बड़े मजे की terms आती हैं जो popular management terms भी हैं. Some of these terms are like the buzzwords these days कि वो कहते हैं जी आपके अंदर ये होना चाहिए. Especially when I'm working with kids, I think the most important skill that any young professional should have is mindfulness. And something which is very important to organizations, जिसके ऊपर बहुत बात होती है, बहुत discussion चल रही है, is emotional intelligence. जिसको अगर हम common sense की terms में बात करें तो emotional intelligence is knowing when to talk, and mindfulness is speaking your mind in a way that it does not offend the other person. There are thousands of ways of doing this. इसकी अगर आप global examples में बात करेंगे तो Japanese are the coolest people in the universe, because वो उनके अंदर empathy बहुत ज्यादा है, उनके अंदर respect बहुत ज्यादा है, and then they have developed scientific, creative, artistic management ways to solve their problems. So one of those problems जिसके ऊपर मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है, it's called Mekigami. So Mekigami is a Japanese technique जिसमें वो क्या करते हैं कि अब वो अपनी where this comes from is it's an opposite of origami. Origami is making things, and Mekigami is breaking things. So वो करते क्या है कि it's a management tool जिसके through वो अपने processes को charts के ऊपर लिख के बड़े charts के ऊपर करते हैं. Mindset इसके पीछे क्या होता है कि वो क्योंकि बदतमीजी नहीं करना चाहते और वो बताना भी चाहते हैं, so they're वो बड़े केयरफुल होते हैं अपने लफ्जों की सिलेक्शन में. So they do Mekigami. Now Mekigami के through they can solve problems for their organization. Now Japanese इस चीज के अंदर बहुत perfect करते, they have done a lot of these things. Six Sigma है, उनका total quality management है. So those are the kind of people that we should really look up to. और अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करें, it's just few articles away, you can pick up so many of those things. Now coming to what I was talking about, कि non-cognitive skills important इसलिए हैं क्योंकि they play a major role in your workspace. They are what define you at work. Now, if you're a grumpy person by nature, and if you have developed good soft skills, तो वो grumpy nature आपका हो सकता है personal हो, आप बहुत grumpy हो, आप कहें मैंने किसी से बात नहीं करनी, लेकिन अगर आप soft skills की कुछ चीजें जो मैं आपको भी बताऊंगा, अगर आप वो develop कर लें तो you can be one of the best person in the office जिसके साथ सारे काम करना चाहिए. जरूरी नहीं कि आपको बोल के ही सारी चीजें करनी है. There's non-verbal communication, less is more. तो बहुत सारे इसमें aspects हैं. Again, non-cognitive skills के ऊपर बहुत सारी debate होती है. आजकल debate जो है वो मतलब it's steering towards के is education even important, or should people be hired only on their skills? So education is for the mind, skills is for the rest of your life. ठीक है, तो अगर इन दोनों चीजों का अगर आप balance किसी तरह भी maintain कर लें, that would be really nice. Now moving on, and so this is because देखिए मेरा ताल्लुक academia से है, तो मैं कुछ चीजें academia के point of view से बताऊंगा, and then if you have questions, and then I will address you with examples कि मैंने जिन organizations के साथ काम करके सीखा है कि उनको क्या चीज पसंद आती थी और उनको क्या चीज नापसंद होती थी. Because अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो फिर बहुत मजे की कहानियां मैं आपको सुना सकता हूँ, but और आप उससे बहुत सीख सकते हैं. But Harvard Business School का Harvard University is a very prestigious institute, and they have an interesting blog, and you should invest into blogs. That is my genuine advice to all of you. पढ़ें, खुदा के लिए पढ़ें. आप 5 मिनट भी अगर पढ़ सकते हैं ना कोई अच्छी चीज, productive चीज पढ़ें. It's better than scrolling, 1,000 times better than scrolling. Read something. So Howard का एक article है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि based on how the technology is changing today, because the world is really going upside down now. A lot of your jobs are being replaced by artificial intelligence, by computers, by automation. So in the next 10 years, there won't be enough jobs, and that's the reality. ठीक है, nobody will talk about it because हम AI को welcome करें, wow वो हमारे लिए सोच रहा है, it's so nice.
but the reality is that artificial intelligence is being designed to replace humans at their basic tasks. So which means कि अगर आपने AI के साथ keep up करना है, और believe me कि जिसने खाना भी नहीं खाना, जिससे पैसे भी नहीं मांगने, that's the perfect employee. But perfect employee के साथ अगर आपने compete करना है, sorry, but that's the truth. But अगर आपने perfect employee के साथ compete करना है, so आपको अपने skills को enhance करना है. So इसके अंदर वो बात करते हैं जी कि because skills are enhancing and because technology in the last 30 years has this gone crazy, मतलब हमने we're actually in the best era of human evolution and human revolution. यहाँ पे सारी चीजें हमने देख ली हैं. COVID single-handedly has, I mean, 10 years ago, मैं जब टेक्नोलॉजी के कोर्सेज पढ़ाता था तो मैं कहता था जी कि एक टूल आएगा, एक जमाना आएगा जहाँ पे हम Zoom जैसी कोई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, और कोविड में ने वो प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजीज की बहुत स्पेस है. 15 साल पहले हम इमेजिन नहीं करते थे कि मोबाइल फोन के बगैर हम नहीं रह सकते थे. अब हम मोबाइल फोन के बगैर नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते. एंड वी आर डूइंग communication round the clock. I mean, WhatsApp is the number one tool for communication. I mean, not formal communication, but general communication. There are softwares which make life so easy. Slack कभी आप use करें, आप Trello use करें, तो आपको शायद रात को नींद ना आए जब आपको आपकी टास्क की अपडेट देगा कि फलाना काम नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ. But coming to what this article is about, by the way, मैंने हर चीज का, I'll give you a copy of this presentation so that you guys can benefit from it. There जहां से मैंने सोर्स किया, मैंने वो सारी चीजें अच्छे बच्चों की तरह नीचे दी हुई है ताकि आप सीख सकें. And that's very important. हमें लगता है कि हम अगर अपनी इंफॉर्मेशन किसी को दे देंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएगा. आई थिंक अंग्रेजों से हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि वो कहता है इंफॉर्मेशन आपकी है ही नहीं, इट इज somebody else's, so you need to pass it on, keep passing it on. So इस आर्टिकल के अंदर what they do is कि it talks about कि अभी जो organizations को चीज चाहिए जो वो आपसे ढूंढ रहे हैं is analytical thinking and innovation. They are primarily looking for entrepreneurs in their job roles. Now इसका मतलब क्या हुआ? अब entrepreneur by definition तो वो बंदा होता है जो अपना काम करता है, लेकिन देखिए हर बंदा अपना काम नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे मुल्क में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, जहाँ पे चीजें कम है, तो हम यूजुअली जॉब मार्केट की तरफ देखते हैं. अब उसका ये मतलब नहीं कि अगर आप जॉब में आ गए तो आप कभी अपना बिजनेस नहीं करेंगे, कभी अपनी कोई चीज नहीं करेंगे. सो उसके लिए वो एक चीज कहते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन की तरफ आप आएंगे तो आपको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट चाहिए. नाउ व्हाट दैट मींस इज कि for a change, take ownership of the business. Don't be like, अच्छा जी मुझे तो क्योंकि 9 to 5 में तो काम करता हूँ, तो 5:30 I don't care what the organization does and I am only living for my paycheck. If you are one of those people, good luck to you. And हो सकता है बहुत successful हो जाए. You don't have to listen to me. But the fact is कि organizations are now looking for entrepreneurial people. They are looking for people who want to disrupt and who can use their logic to create innovative, inventive solutions. And that's the first thing which this article says. अगली चीज कहते हैं जी कि active learning और learning strategies impart करने की उनको आदत हो. Now what this means is कि now employees are looking for people जिनको सीखने का शौक हो. Now for example, जिस तरह अगर मैं इस particular जो हम activity कर रहे हैं, this activity I've not done myself. So for example, इसमें मतलब 15 मिनट पहले अगर आप आते और अगर आप ये देखते, so we were setting up cameras, we were testing audio, we were testing कि अच्छा ये Zoom पे चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी. Now this is part of a mindset which an organization is looking for. They don't want no's कि आप नए, या जो टर्म होती है कि नए शेयर्स उनको नहीं चाहिए, उनको yes वाले लोग चाहिए. And that does not mean कि आप blindly हर चीज पे yes कह दें, which means is कि अगर आपको कोई टास्क असाइन हो तो उसमें कहें जी let me get back to you with the timeline. I will do my homework and then I'll respond accordingly. So you थोड़ा सा सोचें. और so what they're actually looking for you and you, what they're actually looking for in you is a drive कि आप सीखना चाहते हैं. और आजकल स्किल की सीखने कितने आसान है जी. फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग का टूल अगर आप कहते हैं, there are apps which are out there, 15 मिनट का उसका learning curve है, and you can pick up video editing, you can pick up photography, you can pick up graphic designing. And now graphic designing has become so easy, you don't even have to learn Photoshop. आप Canva खोलें, and if you're lucky आप उसकी premium service लें and you get all these templates in the world, and all you have to do is apply analytical thinking and some innovative part of your brain. थोड़ा सा अगर आप ज़हन इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं तो you can actually make the same things जो कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक बंदा बिल्ड करता है. Now this does not mean कि Photoshop redundant हो गया. Now this does not mean कि Illustrator की डिमांड नहीं है. It means कि आप एक certain role के अंदर आप active learning और
अपने माइंडसेट को पॉजिटिवली एंगेज रखते हुए आप डे टू डे का जो काम है आप उसको क्लोज करें, एंड नॉट ओनली विल दिस कंट्रीब्यूट टू योर पर्सनल ग्रोथ, believe me, it contributes to your reputation, and organizations के अंदर reputation is very important. They like people who can take on tasks. They don't like people जो कहें कि नहीं सर अभी तो 5 बज गए हैं, मैंने तो घर जाना है, तो मेरी मम्मी ने कहा है कि घर आ जाओ. Those are not the people that who make organizations. And I'm not saying कि late बैठने से भी आप successful होते हैं. आप successful होते हैं कि आपको जो task दी जा रही है वो आप effectively और efficiently खत्म करें. Effectively more, efficiently less. Because I believe कि अगर आप efficiency में जाते हैं तो आपके पास ज्यादा काम आएगा. And that's something which I don't agree to. क्योंकि देखें होता ये है कि अब इसकी तरफ ही हम आगे बात करेंगे कि अगर आप कहेंगे ना कि मैं तो वर्कaholic हूं, मैं सारा काम मैं करूंगा, तो सारा काम आप ही के पास आएगा. Then you will burn out, and then you won't be able to maintain a work-life balance. You will always be working, and if you're always working, then आपका brain एक दिन फट जाएगा. And that is how you get a lot of employees जो burn out कर जाते हैं, और वो burn out करने के बाद extreme dissatisfaction होती है, and there's a lot of turnover for that because of that also. So point is कि you need to have an active learning mindset, and that is very important. Moving on again, जिस तरह आप analytical thinking के लिए आपको थोड़ा सा initiative लेने की आदत डालनी चाहिए. It's okay to to do new things. Organizations, not all organizations, I'll be very honest, हर organization इस चीज को value नहीं करती. लेकिन again, the organizations where I have worked, I've been very lucky, I've been very fortunate कि जब भी मैंने किसी idea को put up किया है, हाँ हो सकता है पहले 10 मिनट में आइडिया शूट डाउन करते हैं कि दिस डज नॉट मेक सेंस, नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप एक स्टूपिड आदमी हो और आपको काम नहीं करना आता और आप ओरिजिनल नहीं हो. दे हैव ऑल, सो देयर आर वेज ऑफ शूटिंग डाउन आइडियाज आल्सो. बट if you have a knack of coming up with new ideas, आप हैमर करते जा रहे हैं, आप एक नए आइडिया के साथ रिसर्च के साथ जा रहे हैं, आप एक पेपर के साथ बात करें. यूजुअली हम करते क्या है, मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूं. सो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टर्नओवर बहुत बड़ा है, राइट. टर्नओवर का मतलब होता है कि वहां से बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं. इसकी मैं एग्जांपल आपको टेलको से दे सकता हूँ. टेलीकम्युनिकेशन जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती है, इसके अंदर कॉल सेंटर्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत टर्नओवर होता है, बिकॉज कॉल सेंटर के अंदर जो आपकी रात की जॉब होती है, ठीक है, और उसमें आपको बहुत ज्यादा लोगों से बात करनी होती है और आपने रिसीविंग एंड पे लोगों की बकवास सुननी है. दे विल से सम रियली मीन थिंग्स टू यू. वो आपको कहेंगे कि उसका फोन नहीं चल रहा और आपने आगे से रिस्पॉन्ड करना है कि जी आई एम सॉरी, आई फील. सो दैट हैज अ लॉट ऑफ टर्नओवर. नाउ इफ यू वर टू कम अप विद एन आइडिया टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और अगर आप रश करते हुए जाएंगे अपने मैनेजर के पास कि जी, क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट है, आप में एनर्जी भी ज्यादा होगी, आप हो सकता है भागते हुए जाएंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास वंडरफुल $1 million आइडिया आ गया, मैं टर्नओवर इतना कम कर दूंगा. chances are that your idea will not be listened to. It's a 50% chance. I'll tell you why. Because you will interrupt your manager. He might be in the middle of something. वो आपको उसमें, because वो बंदा बहुत refined और he might have been in the organization for some time now, he might not be ready for your energy. वो आपकी energy देख के ही थक जाएगा, यार ये आइडिया मैंने नहीं करना. या he might be resistant to change. So how do you approach such people or such things? आप email draft करें, आप एक 1 pager बना लें, आप कहिए जी कि ये आइडिया है, ये इसका पोटेंशियल बेनिफिट है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. बिकॉज अच्छा, फॉर सम ऑफ यू दिस विल लाइक नहीं, दिस डज नॉट मेक सेंस, कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इट वर्क्स. मोस्ट ऑफ द टाइम वो शायद आपकी एनर्जी देख के आपको रिस्पॉन्ड ना करें, लेकिन आपका स्ट्रक्चर देख के, पेपर पे आपके थॉट की कंपोजिशन को देख के, और अच्छा जी आपने ये बात की, अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ऑर्गेनाइजेशन को इससे ये फायदा होगा, ये इसका की फायदा होगा, इतनी ड्यूरेशन होगी, इतने पैसे लगेंगे, उस स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट को देख के वो आपकी बात सुन लेंगे. And most of the time I've done this. I'm very high energy. So most of the time nobody listens to me. But then I make it a point that I keep, nagging them professionally. मैं emails करता हूँ, फिर मैं follow-up emails करता हूँ. Until I hear a no from everybody in the organization, I don't sit down. And that is taking initiative for you. ठीक है, अगर आप initiative नहीं लेंगे, believe me, opportunities भी नहीं बनती. Acha, now another thing which is happening in the all over the world is कि technology की design के ऊपर बहुत काम हो रहा है, programming के ऊपर बहुत काम हो रहा है, and this is a huge change, which means कि अगर आपको programming नहीं पसंद थी, अगर आपको computing नहीं पसंद, तो it is time to pick one program for yourself. आजकल बहुत सारी opportunities हैं. अगर आप LinkedIn पे हैं, तो LinkedIn का अपना एक offset है LinkedIn Learning का.
It's a sister concern. और वो क्या करते हैं कि they have acquired lynda.com, by the way, so they have an archive of about 4,000 to 6,000 courses, online courses, which require a mere investment of $25 per month. And $25, believe me, कुछ भी नहीं है अपनी personal growth के लिए. And you can learn 3D animation, graphics, वो जो बहाने होते हैं ना, या वो जो बचपन के शौक होते हैं कि जी असल में मैं ग्राफिक्स करना चाह रहा था और मैं गलती से मैनेजमेंट साइंस की डिग्री में आ गया. So you can actually pick up all those skills, and now people really appreciate those. Those are in high demand, and if they are in your resume, those will not be part of your soft skills, believe me, but they will actually show कि आप ना सीखने की सलाहियत रखते हैं, and that is very important. Moving on, critical thinking, something which is very easy to misunderstand, and then at the same time, critical thinking क्या है? Critical thinking is कि आप चीजों को गेज करें, आप अंडरस्टैंड करें कि चीजों के अंदर गैप क्या है, एंड देन यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क. तो वो कहते हैं कि अगर आप ये दो स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं या ये दो स्किल्स आप बिल्ड कर लेते हैं, so you can actually be like the number one person to go to in an organization. I remember when I used to work in a multinational organization, a lot of people used to come to me and they were like, because I was able to articulate and whatever they were saying and try to translate into management terms कि अच्छा ये बात अगर आप इस तरह करेंगे तो उनको समझ आएगी, अगर आप गुस्से में जाके करेंगे तो उनको शायद नहीं समझ आएगी. So they used to come to me and then I would guide them accordingly. So I think this is a core skill that you guys need to develop. Critical thinking, कि आप एनालाइज कर सकें, आप इमोशन फ्री कॉन्वर्सेशन के अंदर इंगेज करें, जिसका ये सबसे मुश्किल काम है और इसके ऊपर मैं आगे भी बात करूंगा. सो फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स में जब लोग कॉल करते हैं तो वो आपको, अगर वो आपकी सर्विस को बुरा भला कह रहे हैं, तो अगर आप उनकी सर्विस के साथ अगर इमोशन को अटैच कर देंगे और अगर उससे गेज करेंगे तो आपको कभी उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी. लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि अच्छा यार इसकी प्रॉब्लम ये थी, रूट कॉज ये था, यहाँ से ये चीज प्रॉब्लम है. सो यू विल बी एबल टू क्रिएट वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड बिलीव मी, आई हैव डन दैट. I've done a lot of crazy things. I once designed core values for a company, and they were like, we don't need them. And I was like, you really don't need core values, but if you have core values, it's going to be very nice. तो हैमर करते रहे और आई थिंक 6 महीने के बाद किसी दिन एक बंदे ने मेरी बात सुन ली. सो those 6 months probably for me were excruciating. So it's important to develop a sense of critical thinking and being able to solve problems. Another thing which most people will talk about, you need to have leadership skills. Now leadership skills, अगर आप रूट पे जाएं तो लीडरशिप स्किल्स ये नहीं है कि आपको बस लीडर बना दें किसी भी सिचुएशन में, क्या आप कहें जी कि मैं बताऊंगा आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे. दैट इज नॉट लीडरशिप स्किल्स. लीडरशिप इज बाय इफ यू आर अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन के आपका एम्प्लॉई या आपका टीम मेंबर आपके साथ काम करने के लिए ना अगर राजी होना चाहिए, ही शुड बिलीव इन यू कि यू एंड him or her are aligned on a common goal. And उसके अंदर बहुत जरूरी चीज है कि you have to do these things by example. Somebody saying कि जी I have an open door and आप आ जाएं और मैं आपसे सारी बात करूंगा और जैसे उसे को बात करने जाए तो उसे डांट पड़ी हो, so that open door policy is not going to change anything. It's not going to change how people are. It's not going to change how people should be. And as young professionals, you will not go to that person for advice, चाहे वो कितना भी अच्छा हो या कितना भी अच्छा गाइड करता हो. एक चीज है जिसके ऊपर मैं स्ट्रेस करूंगा, एंड आई थिंक मैं इसके ऊपर टाइम एंड अगेन स्ट्रेस करूंगा, जो कि जिसके ऊपर मैनेजमेंट की ढेर सारी किताबें भी हैं और आप इस पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, ऑब्वियसली बाय रीडिंग. पढ़ने से किताबें पढ़ने से बहुत ज़हन खुलता है, and I strongly believe that you should अगर आप अभी if you're starting out, so you should read at least 2 to 3 books a month. आपको जरूर पढ़ने, छोटी-छोटी किताबें पढ़ें, it doesn't matter. Power of Now पढ़ लें, एक फैंसी किताब है जिसका ऑरेंज कवर है जिसपे 4 letter words लिखे हुए हैं, वो भी पढ़ें. Read books which can add value to your life. ठीक है? Because what they will do is that they will fuel something which is called emotional intelligence, knowing when to talk, knowing किस situation में क्या बात करनी है, कौन सी बात कैसे करनी है, empathy build करके बात करनी है. Because if you don't have empathy embedded in you, you will never be a good employee for any organization. You'll be a selfish employee. And organizations now are not looking for selfish employees. They're looking for team players जो उधर से retire होके निकले.
you know कि अच्छा अगर रिटायर होकर नहीं भी निकलते तो वो आए तो वो 4-5 साल में कहें यार फलाना बंदा जो था ना he was an excellent person, you know, आपका एक relation होता है. So for example, I've been very blessed as a graphic designer, as a design thinker. A lot of my friends जो कि अब बड़ी-बड़ी पोस्ट में हैं वो भी मुझे फोन करके कहते हैं तुमने फलाना फलाना काम मेरे लिए करना है, और वो इसी तरह मेरे से बात करते हैं जिस तरह मैं उनको 10 साल पहले रिपोर्ट कर रहा हूँ. Because I have invested on that, मैंने emotional intelligence का इस्तेमाल उनके साथ भी करता रहा हूँ और उनके साथ मैंने एक रिपोर्ट बिल्ड की हुई है. They are always willing to invest onto me, and it's important to have those relations. इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, मैं इस बंदे को जानता हूँ, मैं इस बंदे को भी जानता हूँ. उसका कोई फायदा नहीं होता. जो बंदे आपके काम आ सकते हैं वही आपके काम आ सकते हैं, ठीक है. Those are the people which help you out. But उसके लिए you should be approachable. You should not be the person जिसे लोग बात करते हुए घबरा रहे हैं और कहें यार कि हमने से बात नहीं करी. Moving on. Again, थोड़ा ही फर्क है स्टेटमेंट्स का, बट उनमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में है. Reasoning and problem solving. Problem solving is an attitude, it's a mindset. But reasoning का जो सेंस है जिसके ऊपर बात होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है ना वो आप ओवर टाइम ठीक कर सकते हैं. जिसका मतलब क्या है, अगर आपसे गलती हुई है, एंड दिस इज माय लर्निंग, कि आप अपनी गलती राइट अवे ओन अप कर लें. कुछ नहीं होता, थोड़ी सी डांट पड़ेगी, शायद ज्यादा डांट पड़ जाए, हो सकता है लेटर मिल जाए, बट ये सारी चीजें से आपकी मैसेजेस जो आप ले सकते हैं कि अच्छा यार मैंने ये गलती की, अब मैं इसको ऐसे ठीक कर सकता हूँ. मोस्टली होता ये है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और ये मैंने खुद भी देखा हुआ है कि हम गलतियों के साथ अपने इमोशंस अटैच कर देते हैं, और जब हम गलतियों के साथ इमोशन अटैच करते हैं तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग और थिंकिंग सारी जीरो हो जाती है. उसके जीरो होने की वजह से यू आर अनएबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और इसलिए फिर हम कहते हैं हम किसी को ब्लेम करें, यार ये इसकी गलती होगी, फलाने की गलती होगी, उसकी गलती होगी, इसकी गलती होगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी एबल टू यूज माइंडफुलनेस, यू नो, सेंस ऑफ ओनरशिप. आपसे गलती हुई है, ओन इट, कोई बात नहीं, अच्छा जी मेरे से गलती हो गई है, आई अंडरस्टैंड, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं ओन करता हूँ, मुझे बताइए कि हाउ कैन आई फिक्स दिस. एंड देन समथिंग, इससे जो चीज निकलती है वो निकलती है सिस्टम एनालिसिस एंड एवेल्युएशन. इफ यू आर एक्चुअली, अगर आप अपने करेक्टिव मेजर्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट एसओपीज कि जनाब ये मैंने गलती इस तरह की थी और इससे मैंने ये सीखा कि आइंदा गलती ऐसे नहीं करनी. एंड देन यू नो आई हैव मेड अ वन पेज डॉक्यूमेंट व्हिच सेज के don't ever do this again, इसका ये consequence है. And then you can actually have like notes for tasks. अच्छा, now how do this work in an organization? So for example, आप कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, right? And सॉफ्टवेयर रन करते हैं और उसका अगर आप SOP नहीं बनाते या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बनाते, so the same people will do the same mistake over and over again. Now if you want to be that entrepreneurial mindset wala employee, yeah, team player, and like a guy and or a girl who wants to be really invested in their skills, you would go and make that effort. ठीक है, अगर आप एक वो वन पेजर डॉक्यूमेंट बना देंगे अपनी टीम के लिए तो आपको शायद दुआएं तो मिले, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्नाइज भी ना करे, बट what you have done is कि you've solved problems for 10 more people जो कि उस चीज में से दोबारा गुजर सकते हैं. And it's very important to have that structure, you know, कि चीजों को रखें. मोस्टली अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टम्स पे चलती हैं, बंदों पे नहीं चलती. पीपल आर इम्पोर्टेंट. ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट ऑन ह्यूमंस, ऑन वो कहते हैं यार कि हम गूगल की एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर आपने एक फिल्म देखी होगी, द इंटर्नशिप. दैट्स अ वेरी फैंसी मूवी. गूगल ने खुद ही बनवाई थी अपनी प्रमोशन के लिए कि उनका हायरिंग का प्रोसेस कितना फैंसी है. ना इमेजिन करें कि उनका हायरिंग प्रोसेस के अंदर वो बंदे के आने से पहले उसकी सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद है, ताकि जब वो जॉब में आए और अपना काम करे तो उसको कोई डिस्ट्रैक्शन ना मिले जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो. दैट्स वेयर ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग नाउ. फॉर एग्जांपल आपकी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, अगर उसमें से टॉप 100 कंपनीज को आप स्टडी करें, मैंने किया हुआ है, आपको भी करना चाहिए, बहुत मजा आएगा. What you would realize is कि those are the companies that not only invest on their employees are mostly owners in their company, and that is what makes it amazing, you know, कि वो किस तरह grow कर रहे हैं. Moving on, something जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ, पीटर गिल्वी एक बहुत cool आदमी है एडवर्टाइजिंग के अंदर. He's actually the king of advertising. He's sometimes also called the father of advertising. And he says and from a hiring point of view, he says this, you need to hire people who are better than you and then leave them to get on with it. Look for people who will aim for the remarkable, who will not settle for the routine. Now, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बड़ा बायस्ड होता है. इट्स वेरी ट्रिकी कि आप एट टाइम्स
किसी ना किसी को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे होते हैं, या आपको एक सर्टन बंदे की एक सर्टन वैल्यू पसंद है तो आप बाकी चीजें निगलेक्ट कर देते हैं. एंड सो उसमें आप ये कर सकते हैं इजीली कि अगर आप थोड़े से भी माइंडफुल हैं और अगर आप थोड़े से भी वो हैं कि यू नीड टू हायर लाइक अमेजिंग पीपल. एक अच्छे एम्प्लॉय का 1 साल और एक एवरेज एम्प्लॉय का 4 साल बराबर है. एंड सो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट करते हैं. दे विल सेंड यू टू ट्रेनिंग्स. दे विल फाइंड आउट कि अच्छा आपके फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हैं, चीजें क्या हैं, एंड देन दे विल इन्वेस्ट इन. सो गिलवी मुझे एक बंदा 1960s में ये बात कर रहा है. सो व्हिच मींस ही हैज फिगर्ड आउट द सीक्रेट टू how the organization should work, how the people should be. He's figured everything out, and that's why they call him the father of advertising. And अगर आप कभी गिलवी के बारे में भी पढ़ें, you'll be surprised that he has so much to say about management and hiring people, and then he's a great advocate of soft skills. Now कुछ चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा और ये सबको पता होता है कि जी इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. Now इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको सुनने की आदत होनी चाहिए. Now with the new generation, and especially when I teach them here also at my university, हमारी सुनने की ability बहुत कम हो गई है. Now so you need to, इसलिए इसको कहते हैं कि आप hear ना करें, you should listen. Now what that primarily means कि अगर आप ऑटो पायलट पे चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको बस एक कान से बात आ रही है, दूसरे कान से निकल रही है, एक कान दोनों कानों में आ रही है और आप बिल्कुल भी नहीं सुन रहे क्योंकि आप किसी थर्ड डायमेंशन के अंदर भी फिर रहे हैं. So that is very important कि you need to listen. So for example, I'll give my own example. मैं किसी भी अगर मीटिंग में बैठूंगा या मैं किसी चीज में बैठूंगा, I'll always have like a copy in my hand. हो सकता है मैं डूडलिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं डूडलिंग करूंगा तो मैं जब भी वो डूडल दोबारा देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि जब मैं ये चीज बना रहा था तो उस वक्त ये बात हो रही थी. अगर आपको लगता है कि वो मीटिंग आपके लिए यूजलेस है और अगर आप फिर भी उसके नोट्स बना लेंगे, so you never know कि वो कौन सी चीज कहाँ आपके काम आ सकती है. And believe me, in organizations, having an open ear and having a कि भाई मुझे कोई सिखा दे, I want to learn, I'm willing to learn, I submit to your methods for learning and development. अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हो, I don't see कि आप आगे क्यों नहीं जाएंगे. Unless आप stupid हो कि आपने काम भी नहीं करना, आप कहें मैं सिर्फ सीखने हैं और मैं काम में नहीं रिफ्लेक्ट करूंगा. I don't see कि क्यों चीजें नहीं होंगी. Another aspect is the verbal and the non-verbal communication aspect. People can't read tones. We have a huge problem in organizations of invading other people's personal space. कि लोग कैसे बात करते हैं, कुछ लोग introverts होते हैं, हम उनको extrovert बनाने में invest कर देते हैं. So we need to realize people and their communication strength. Otherwise, this will lead to misunderstandings or conflict. Now, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है. अगर आपने misunderstanding build कर ली है, most of the time, if somebody thinks you're arrogant, it will take I don't know, it will take like $1 million to change his mind कि आप arrogant नहीं है. हो सकता है आप ना arrogant हो, लेकिन आपके demeanor से भी आप arrogant लग सकते हैं. आप किसी की तरफ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे तो वो समझेगा आप arrogant हैं. आप यूं करके ऊपर देख के बात कर रहे हैं तो लोग समझेंगे आप arrogant हैं. आप मतलब इट्स वेरी क्रूड थिंग टू से, आप बहुत शेखी हमारे तभी लोग समझेंगे आप बहुत एरोगेंट है कि आप अपनी 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 बात करें, मैंने ये किया, मैंने ये किया, blah 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 blah. But arrogance is primarily looking down upon people, and if that suits you as a person, you won't fit in an organization. I mean, you can fit in an organization. आप अपनी organization बना लें, आप नीचे अपने 50 employees रख लें, but those employees won't respect you. And that organization will also not be successful. हाँ, हो सकता है बड़ी successful हो, लेकिन वो एक rarity है. अच्छी organizations के अंदर misunderstanding की कोई space नहीं होती. Conflict resolution के ऊपर वो invest करते हैं, वो stress management के ऊपर invest करते हैं, वो employees की training के ऊपर इसलिए invest करते हैं because वो कहते हैं कि आज हम एक अच्छे employee पे invest करेंगे, he will recruit 10 more interesting, better people to be. And then देखें for example, आप में से कोई एक company में 4 साल लगाता है. And this is something which I also say to all fresh graduates. पहली कंपनी में एटलीस्ट आप 3 साल लगाएं. जिस कंपनी को आप ज्वाइन करें 3 साल आप उधर दें या मिनिमम 2 साल दें. अगर आप अपने रेज्यूमे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंड क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी काम किया है तो आई नो हाउ इट इज. when recruiters are looking at resume और एक बच्चे ने 3 महीने 6 महीने 3 महीने 6 महीने 3 महीने 6 महीने 6 महीने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, so he does not know anything about the organization. He's not sink in, he's not seen the processes.
So that's my genuine advice to all of you guys out there. जितने भी आप लोग हैं, आप कभी ये देख रहे हैं, देखेंगे या, so please spend at least first 3 years of your life, because आपकी वो सारी and then I also pray कि आपको बहुत अच्छा मैनेजर मिले जो कि आपको सिखाने वाला हो, क्योंकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है. एक अच्छा मैनेजर आपको करियर बना देता है, एक बुरा मैनेजर आपका बहुत तंग करता है. So it's very important कि ये इन चीजों के ऊपर आप build करें. Now moving on, so and then at this point, guys, do you have any questions? Okay, मैं अपना ये monologue continue करूँ. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, and it makes some sort of sense to you guys. Milu, could you find out? Yeah, there were a couple of questions. हम उनको साथ text में answer करते गए थे. But like I will add to what you were saying कि अगर कोई आपको कोई बात कर देता है, and this is coming because I recently joined Kamai as a team member. So if somebody is giving you feedback, you can take it constructively as well. You don't always have to get offended. ऐसे नहीं होता कि आपको हर चीज आती हो when you enter, right? Achha, so sorry, I will cut in because feedback एक बड़ा problematic area है, and हम feedback नहीं देते, हम criticism करते हैं. Feedback और criticism में जमीन आसमान का फर्क है. Feedback is telling somebody this is what was required to do, this is what you did, and this is what you did wrong. Criticism is you're stupid, you don't know what to do, तुम्हें काम नहीं आता, तुम किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तुम्हें पढ़ाया किस टीचर ने, उसको भी पढ़ाना नहीं है. That is criticism. और criticism usually is negative. अच्छा, अब एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जब आप देख रहे होते हैं और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जगह भी बनानी होती है, आप ये बिल्कुल दिल पे लेते हैं. सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो भी आपको बात कही जा रही है, कोशिश करें, एंड दैट्स माय जेन्युइन एडवाइस, कि टोन को इग्नोर करें. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब इफ समबडी शाउटिंग एट यू, बिलीव मी, आप जोन आउट होते हैं कि यार मैं क्यों इसकी ये टोन सुनूं. लेकिन आई हैव सीन and I have done this myself. One of my friend used to shout at me, right? और वो मैं काम कर रहा हूँ, हम एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कॉस्ट किया जा रहा है, शाउट कर रहा है मेरे पे, और मैं सुन रहा हूँ, और फिर मैं ऑटो पायलट पे चलाया था, मैं इसकी बात नहीं सुनता था. But then one day I decided कि यार हो सकता है वो जब शाउट कर रहा हो तो उसमें 2% को कुछ सही बात भी कर रहा हो, So I took his feedback, और उसमें से 4 बातें मुझे अपने काम के इम्प्रूवमेंट की आई थी. लेकिन इसमें the key message is कि then you have to step back. Any criticism which is being given to you is not about you. It's about the job that you're doing. It's about the task at hand. और अगर आपको कोई चीज नहीं आती, own up. जैसा फॉर एग्जांपल मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को एक्सेल नहीं आता. वो लिख तो देते हैं कि हमें एक्सेल आता है, लेकिन जब एक्सेल पे पहली बार उनको पिवट टेबल बनाना पड़ता है तो वो कहते हैं जी पिवट टेबल क्या होता है. फिर मैं कहता हूँ जनाब आपको पिवट टेबल नहीं बनाना. नहीं सर, हमें तो किसी ने नहीं सिखाया. तो मैं कहता हूँ बेटे जाके सीखें. नहीं सर, अब मैं कैसे सीखूं. सो वहां ये लफ्जों से आपको पता चल जाता है कि किस बच्चे में एटीट्यूड है टू इम्प्रूव और किस में है कि उसे नहीं सीखना. And it really is a deal breaker. Yeah, but that's the kind of a thing that you say. मतलब you can say कि अच्छा ये चीज मुझे अभी नहीं आती, but give me 2 days, I can learn this and I can come back. Yeah. Now, when somebody says that, I really appreciate. That is the kind of employee or the team member that I want to work with. अगर ये कहता है सर मुझे आता ही नहीं है, मैंने तो कभी सीखना ही नहीं है, और आप जो बोल रहे हैं वो total garbage है, so you will know that, and you can read that from people's body language जब आप उनके ऊपर उनको बता रहे होते हैं. And this is a problem for everybody these days. I think take a deep breath, step back. एक बार वो जो बंदा बोल रहा है उसको बोलने दो, उसको इंटरप्ट ना करें, क्योंकि आप गुस्से में रिस्पॉन्ड करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे. सिमुलेट करें, हजम करें. अगर आपको कोई बहुत बुरी बात लगी है, जो कि यूजुअली लोगों को लगती है, you can reply formally through an email also कि जी आपने मेरे से ये जो बात की थी ना, आपकी मुझे टोन ठीक नहीं लगी. लेकिन that's not the the problem with that would be, I'm sorry, just to the problem with that be कि that should not be your first resort, that should be your last resort. Most of the times take the feedback, sit on it, एक दिन उसको absorb करें, talk to your friends, अपने अपने social circle में discuss करें. हो सकता है आपको भी समझ आ जाए कि आप गलत हैं, and then bounce back. What people do wrong is they don't bounce back. वो अपने ना एक फेलियर को लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं ओहो शायद मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझे तो काम करना ही नहीं आता. And यहाँ पे managerial point of view से भी managers also need to encourage their team members. If you're not encouraging your team member is not going to improve. I mean, I know that. I mean, मैं अगर किसी से काम कराता हूँ तो और मैं expect करूँ कि वो first go में जो मेरे ज़हन में wonderful idea था वो 100% spot on hit कर ले उससे बगैर बताए हुए, ये मैं expect करता. That's not going to happen. You have to tell people. Expectation आपको बड़ी clearly spill out करनी चाहिए.
I don't think people do that because they don't have the time. Organizations and the kind of timelines that they have, corporate sector हमारा crazy है, मतलब बेचारे काम कर रहे होते हैं, हर वक्त भाग रहे होते हैं, they're running. You guys are running all the time, you know, you're doing things. So, but a good manager would take out the time. He'll take out 5 minutes to teach you. And I think you, as a person, you should look for those 5 minutes. That 5 minutes could be at the end of the day. That 5 minutes could be right before lunch. That 5 minutes could be in between a bestie session. जो आपका हो रहा होगा कि आपने ये काम ठीक नहीं किया. Look out for those sessions, and then believe me, you'll become a better employee. You'll become a better person. Or better person banna is very interesting. It's very important. Obviously, because with all organizations, everyone's looking for professional growth. Yeah. That's the thing that they're looking for. Yeah. And अगर कोई आपको डांट रहा है, अगर किसी ने आपको कोई criticize भी कर, तो वो वजह के बगैर तो आपको criticize नहीं करे. There's something that went wrong. So like a good strategy would be कि आप सिर्फ apologize कर दें, and a lot of times that works. Because you know you're taking accountability for something that you did or did not do for that matter. I will give you my own example. Few weeks ago, हमने एक बड़ी serious presentation देनी थी, and my presentation में अल्लाह का शुक्र है गलतियां नहीं हुई. उस दिन उस presentation में 14 गलतियां थी और ऐसी silly mistakes थी जो मैंने जिंदगी में नहीं की हुई. मैंने उसी वक्त उठते ही पूरे crowd से कहा कि जी I apologize. मैंने तो अगर आप में इसमें कोई गलती है तो that's वो आप में से किसी की नहीं तो मेरी गलती है. So you should own up. कुछ नहीं होता. हाँ, मुझे कुछ लोगों ने उसके बाद भी डांटा, मतलब उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया है, तुम्हें काम नहीं करना आता. मैंने कहा जी आई स्टिल अपोलोजाइज, मेरे से गलती हो गई है. लेकिन हाँ, अगर आपसे गलती हो रही है तो उसको फिर आप उसका आपको खमियाजा भी देना पड़ता है, आपको अपने बिहेवियर ठीक करने पड़ते हैं, आपको काम भी ठीक करना पड़ता है. यू नीड टू गो एक्स्ट्रा माइल्स टू फिक्स दैट मिस्टेक. दैट्स इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट मेक्स यू अ गुड होल राउंडेड पर्सन के जो अपनी गलती से सीख भी रहा है और इम्प्रूव भी कर रहा है. अगर आप अपनी गलती किए जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक दिन आपको लेटर दे देगी और कहेगी जी थैंक यू, हमें आपकी जरूरत अच्छा नहीं, लेकिन इस सब में communication is very important. Even if you're correcting your mistakes and you're not able to communicate that, then that is a problem as well that people need to address. I agree. See how to communicate. देखिए, मैं bottom line after 15 years of working, I think communication is the problem. Most of the time expectations दो बंदों के दरमियान conversation में आप brain की तो waves match नहीं कर सकते. अभी हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं. Telepathy is a real thing, but we're not there. कि मेरे मैनेजर को ये चाहिए, मेरे बॉस के बॉस को ये चाहिए, कंपनी के सीईओ को ये चाहिए. सो यू हैव टू ट्राई टू गेट इट आउट ऑफ देम इन कि अच्छा जी मुझे बताएं आपको क्या चाहिए. अगर आपको वो किसी चीज पे कह रहे हैं कि आपका ये काम ठीक नहीं है, अगर आपने ये चीज ठीक नहीं किया, it's very important. मैंने इस स्लाइड पे भी लिखा हुआ है कि it's very important कि how we cope with emotions. आपका इमोशनल चेक कितना है. आपको कोई डांट रहा है तो अगर आप उसके साथ आप भी उसे लड़ना शुरू कर देंगे तो nobody is going to be उस सिचुएशन का किसी को कोई फायदा नहीं होगा. 0/0 है सिचुएशन. आपको कोई डांट रहा है और आप उसको सुन रहे हैं और उसके बाद आप एक दिन वेट करके फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट मींस कि आपने असिमिलेट किया है, आपने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया. And then there's a way of responding also. Email is one of them. I think it's a very interesting formal, but that's the last resort, guys. That's not your first resort. Sir, आपने मुझे offend कर दिया, मैं आपको email लिख रहा हूँ. No, that does not happen. Most of the time, good managers will recognize this also. अच्छे managers जो reflect करते हैं अपने behaviors के ऊपर, and people who are worried about their team players, जो अच्छे leaders हैं, they will apologize. I mean, मेरे से गलती होती है, इधर मुझे 7-8 लोग रिपोर्ट करते हैं, तो अगर उनसे कोई गलती होती है तो मैं उनकी क्लास भी लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई गलती तो मैं फौरन अपॉलोजाइज कि यार नहीं, I take responsibility for, and it's very important to take responsibility. Yeah. And so guys, again, moving on to the most important slide, soft skills हैं क्या? Soft skills are the abilities which make your work easier, and it's how you interact with people. If you like biting people, chances are that nobody will hire you. But if you are कि आप जो कहेंगे आप कर देंगे, chances are that nobody will hire you still, because दोनों extremes के ऊपर आपको कोई hire नहीं करता. आपको हायर किया जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स और सक्सेसेस की कंट्रीब्यूशंस के लिए. people are looking for people जो कि अच्छे हैं बात करने में, जिनके साथ आप बात करके आप सीख सको, जो आपको सिखाने में इंटरेस्टेड हो, जो और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके साथ वो 5 मिनट आपको दे दें तो आपको पूरा मैनेजमेंट की सारी थ्योरीज जो आपने पढ़ी होती है वो सारी समझ आ जाती है. एंड इट्स वेरी सिंपल. You need to have इसमें भी आगे. So let's just this is a very good website that
came across it. It's called Indeed. Indeed कहता है कि जी आपके जो skills हैं, for example, आप बहुत cool हैं, आप statistical analysis कर लेते हैं, आप mobile development कर लेते हैं. ये वो skills हैं जो हर candidate के पास. मतलब this is the skill जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी पास है. हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और आप में जो फर्क होगा, डिपेंडेबिलिटी, वैसे उसकी डिपेंडेबिलिटी आपसे ज्यादा ही है, बट दैट्स ओके. बट व्हाट अ पर्सन इज लुकिंग फॉर, कैन आई डिपेंड ऑन यू व्हेन आई गिव यू अ टास्क? Are you willing to work? Are you adaptable to tough timelines? Most people are not equipped for timelines, you know. For example, मेरा लाइफ हैक इसमें ये है जो मैंने सीखा है. मैं कोई भी टास्क लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई डेडलाइन क्या है, मैं उल्टा चलता हूँ, मैं तो ये बताओ देनी कब है. So that makes it easier for me, at least for me, that works for me. मैं पहले पूछता हूँ डेडलाइन क्या है, and most of the time uh, it becomes, if I know I have to give something on Friday, most of the time most people will start working on Thursday night at 11:45, you know, अच्छा यार कल सुबह देना है. That works also, but that's not a good habit to build. You'll be आप sleepless होंगे, आप grumpy होंगे, और आप जितना grumpy होंगे उतना आपका ज़हन कम चलेगा. So उसके तरीकाकार ये है कि अगर आप deadline oriented हो जाएं, if you start keeping deadlines and if you start backtracking, you will always finish your work all time. And again, soft skills की जो इसमें भी जो बात है, इसके अंदर मेरे लिए सबसे important चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए, that is the willingness to learn. Please develop that. और ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. विलिंगनेस टू लर्न होगी, और आप में क्रिएटिविटी नहीं भी है, डजंट मैटर, लेकिन विलिंगनेस टू लर्न से आप हर चीज अनलॉक कर सकते हैं. इफ यू हैव इंटेग्रिटी, बिलीव मी, बाकी चीजें भी आ जाती हैं. इंटेग्रिटी इज के okay, so I'll give you an example. So for example, integrity is when nobody is looking at you. आप अकेले जब ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं यार ये 2 पेंसिलें मैं घर ले जाता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा कागज मुझे मिले ये भी मैं घर ले जाता हूँ. That is your integrity right here. Nobody's going, ऑर्गेनाइजेशन को 2 कागज ले जाने से और 2 पेंसिलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनेंशियली. लेकिन ये आप क्या, it's what you were given, what you were brought up with. It's important, you know. अगर आप इन चीजों के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो आपके अंदर इंटेग्रिटी है, right? And that's very important. I think it's a part of our social fabric. It's part of our religion also. मैं religion के point of view से भी इसको इतना endorse नहीं करता, क्योंकि हम अगर basic human behavior से देख लें, I would like to depend on an employee who is willing to respond to me on time. You know, अगर एक बंदा है वो बड़ा जबरदस्त काम करता है लेकिन वो 11th hour पे respond करता है, that is not the person that I would want to hire in any organization, because मैं उस पे आज काम उसे दूंगा और वो कल गायब हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. So moving on is now which skills to develop and how to develop skills. Now this is the tricky bit, and this is the bit जिसके ऊपर मैं आप concentrate करना चाहूंगा, ताकि कौन से skills आपके पास होने चाहिए. अभी तक हमने ये बता दिया कि जी अच्छी analytical skill होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. Now we'll just quickly browse through के internet इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, and then I'll also talk about के which skills should you guys have as students. So for example, Word, Excel, PowerPoint आपको सबसे ज्यादा आना चाहिए. अगर आप Word, Excel, PowerPoint पे अगर आप अबूर हासिल है आपको, तो I think 250K तक की जॉब आपको आराम से मिल सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, because लोगों को Excel नहीं आता. And Excel is such a powerful tool जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. There's even a cool hack in Excel जिसके अंदर से आप piano भी बजा सकते हैं Excel के अंदर. So you know, if you want that, I can share that with you sometimes. कि अगर आपने unwind करना हो तो आप piano बजा रहे हो Excel के अंदर. There's a game in Excel also. Most people don't know about that. It's pretty cool. But Excel is that go-to software जिसके ऊपर corporates thrive करते हैं और survive करते हैं. Because financial reports निकालनी है, updates निकालनी है, task lists निकालनी है, tracking list निकालनी है, that's the software to have. Another thing which organizations now want out of their employees, and I feel I also really endorse that, और मैं ये देखता रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, that is they are looking for project management skills. If you have project management skills, chances of you being a person with good soft skills ये automatically बढ़ जाते हैं. Project management का मतलब ये है कि आप हर चीज को एक टास्क ओरिएंटेशन से देखते हैं, आप उसके ऊपर सही तरह से काम करते हैं, आप डेडलाइंस डालते हैं, रिसोर्सेज को मैप करते हैं. इसके भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स which I also hate and love, मेरा से love hate relationship, that is Trello. Trello is an amazing software. It's really powerful, it's really easy to use, and it's free. कुछ उसके aspects अभी भी paid है, लेकिन you know you can use that. Rike is another software.
Evernote is another software. और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते और आप अपनी जिंदगी में लेजीनेस को तरजीह देते हैं, तो वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो हर विंडोज के साथ इंस्टॉल्ड आता है, एंड दैट इज अ वंडरफुल टूल बिकॉज वो आउटलुक के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, वो आपको रिमाइंडर्स भी दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्टिविटी के टूल्स आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज अ टूल कॉल्ड टास्क्स, दैट्स रियली गुड, एंड यू कैन असाइन टास्क टू पीपल। वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टूल का एक हिस्सा है, लेकिन उसके ऊपर इतना उन्होंने अभी काम नहीं किया। स्पेशलिस्ट टूल्स की तरफ आप जाएंगे, इसके अंदर इवन डिग्रीज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, दैट्स अ कंप्लीट टूल, उसके अंदर पूरी डिग्री है और बहुत सारी चीजें हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स होते हैं जो आपको बताते हैं सर क्या अपना टाइमलाइन से आगे जा रहे हैं, इस पे इतना स्पिल ओवर हो गया है, इतना टाइम आपने जाया कर दिया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्किल्स। नाउ based on another article from Indeed.com, and I just randomly stumbled upon Indeed, and I just fell in love with that website. I was like, wow, yaar, ye kitna acha kaam karte hain. And then they had some really nice videos also, so you guys should also see them. So wo kehte ji ke 6 skills that you need to have a good workplace reputation. Now, as a fresh graduate, aapko, for example, when I was young and when I was interning in Mobilink, uh, every day I used to photocopy, and that was my job. I used to hate that job. Believe me, I used to hate it. लेकिन एक दिन एक और इंटर्न भी आया और हम दोनों क्रिब कर रहे थे कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हम फोटोकॉपी कर रहे हैं तो इसमें क्या बकवास है। सो मैंने वहां पे एक नई चीज करना शुरू की। मैं जो फोटोकॉपी करता था मैं खड़ा होकर पढ़ना शुरू कर देता था, and turns out I started a lot of information, a lot of like I was reading minutes of meetings which absolutely made no sense to me, and at some people will say कि आपने गलत किया, which I don't think I feel that, but इससे मुझे ये समझ आ गया था कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। अच्छा, ये जो मैं डॉक्यूमेंट कॉपी कर रहा हूँ ये क्या है। So I started reading company manuals for no reason because मैं बहुत वेला था तब और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और मैं I was desperate at that time to be picked up by Mobilink, but in the taxation department जिसमें मैं internship कर रहा था वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ taxation के regulations होते थे, तो मैंने वो पढ़ ली। Now इसका मुझे फायदा क्या हुआ कि after 10 years of working with the corporate sector in Pakistan, मुझे अब taxation के सारे laws रटे हुए हैं कि अच्छा कौन सा tax किस चीज पे apply होता है और कौन सी चीज पे नहीं apply होता। तो you never know कि आपका कौन सा skill आपको life के किस हिस्से में help कर देता है, ठीक है। So nothing is useless, everything is useful. आपके ब्रेन में इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं स्टोर रहती है ना। ये आर्टिकल कहता है जी प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी फॉर अ चेंज, बी हम्बल। हम्बल और एरोगेंट में बड़ी फाइन लाइन होती है। लोग हम्बल हो भी रहे होते हैं लेकिन उनको लोग एरोगेंट समझते हैं, लेकिन हम्बलनेस इज अ सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस। यू हैव टू वर्क ऑन इट, you have to reflect on your behavior, you have to apologize, you have to own your things, you have to be nice to people. That's very difficult. किसी के साथ अच्छा होना बिलावजा, हमारे मुल्क में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि why is he being nice to you? Maybe he likes you. No, everything is not about liking people. It's about being nice. You know, you want to be, that's what you want to be known as. ठीक है. Another aspect is you need to know how to sell yourself. That does not mean कि आप कहेंगे जी I'm for sale, you know, I'm so expensive, but it's your skill. अपनी accomplishments को थोड़ा सा tone down करके बताएं and back it up with positive behavior. If you're a smiley person in your organization, people will smile at you, you know. अच्छा आपको चाहिए यार ये अच्छा smiley बच्चा है, you know, that's really nice. Another aspect जिसके ऊपर मैं time and again बात कर रहा हूँ कि build your emotional intelligence. You know, be self-aware, see के कौन सी चीज कैसे apply हो रही है, and then also see के कौन सी चीजें आपको बुरी लगती हैं और कौन सी चीजें आपके colleagues को बुरी लगती हैं, and be mindful of those things. I mean, there's no rocket science. एक बंदे को अगर एक फाइल कवर के ऊपर छोटे-छोटे पोस्ट-इट नोट्स अच्छे लगते हैं, if you do that, वो he would appreciate that. He or she would really appreciate that. And if you do that, yes, it might be an extra mile for you. It will add to your humility and it will also add to you, you know, to learning something. इसके अंदर एक और चीज वो कहता है कि आर्टिकल जो था वो कहता है, और इसके ऊपर मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, वो कहता है जी अवॉइड बर्नआउट, व्हिच मींस इफ यू से yes to everything, there's a chance that you will overstretch, you will overpromise, and you will underdeliver. And overpromise in my view is death. आप प्रॉमिस ही ना करें लेकिन आप ओवर प्रॉमिस ना करें, आप टास्क ही ना उठाएं, आप जो टास्क उठाएं आप वो टास्क उठाएं जो आप डिलीवर कर सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहें, आप अगर वो वाले एम्प्लॉय बनना चाहते हैं जो कहे मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा जी, मैं ये भी कर दूंगा, चांसेस आप कुछ भी नहीं करेंगे। And people can easily spot the yes man and the yes madams in the office कि जी मैं हर चीज कर दूंगा,
You can't do everything. You need people to help you out, and इसके लिए बहुत important है कि you also need to network wisely. You need to understand कि professional relations क्या होते हैं. आपने and again you have to be very mindful कि आप लोग से क्या बात कर रहे हैं. आप email etiquette आपका क्या है. पाकिस्तान में लोगों का email etiquette horrible होता है. People don't know how to write emails. They can't say thank you to people. Oh my God, it's such a crime. मैं किसी को email लिख रहा हूँ और मैंने उसको thank you email डाल दी है, तो यहाँ पे thank you emails का भी रिवाज नहीं है. You don't have a response time का रिवाज कि अच्छा जी मैं email को 72 hours में respond कर दूंगा. Auto responders नहीं लगाते लोग. हम auto responders सिर्फ organization में तब लगाते हैं जब हम छुट्टी पे जा रहे हो. You know, please don't bother me for the next 3 weeks. But हम but अच्छी organizations, and again I've been very lucky to have worked in such organizations. मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे service level agreements होते हैं, SLAs होते हैं कि अगर communication की team को कोई email आई और वो query है तो that has to be answered in 72 hours, and they fight on these. फिर उनको assess करते हैं, इससे department की rating निकलती है. Now those are the kind of measures जिससे आप improve करते हो कि अच्छा यार हमारा response rate ये है, हम इस तरह काम करते हैं. For example, because मैंने core values के ऊपर बहुत काम किया है, तो हम लोगों के इंटर डिपार्टमेंट बिहेवियर को स्टडी करते थे कि आप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं. अगर आपका मैनेजर आपसे ओए करके बात करेगा तो ओए करके बात करने से आपको कोई इज्जत नहीं मिल रही होगी. दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल. यू शुड बी नाइस टू पीपल. आप सर, इफ यू आर सेइंग सर टू समबडी, you know, or madams to somebody, that is not that is a sign of respect. That's a basic common courtesy. तो common courtesy अगर आप establish करेंगे, and if you really you know network wisely कि किस बंदे से आपको रखनी चाहिए, ये भी बहुत debate है कि जी आपको top ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट से बनानी चाहिए. जरूरी नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम ही नहीं होगा और वो आपको याद ही नहीं रखेंगे बिकॉज दे सो बिजी इन मेकिंग बिजनेस लेवल डिसीजंस. वो ऑपरेशनल डिसीजंस में नहीं जाएंगे. लास्ट आइटम इन दिस इज इट सेज के यू नीड टू हैव अ मेडिटेशन माइंडसेट. इट मींस वो जो बड़ा स्लैंग सा है कि आप zen मोड में रहें. zen मोड में रहने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड बिलीव मी इट्स लाइक द टफेस्ट थिंग. And then, you know, Steve Jobs, sorry to make typo, Jobs or Jake is a man. So we're done. So I'm just wrapping this up. By the way, this presentation is also available for you guys. And because क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ और जब मैं presentation बना रहा था, I had no idea where to stop, and I can still go on for like an hour. Just to give you, sorry, Meera, I'm so sorry because मुझे बोलने का बहुत शौक है, बताने का उससे भी ज़्यादा. So Howard का एक article है. It's called what are great teams made of, and these are called high performance teams. So इसके बारे में अगर आप पढ़े तो उसके अंदर high performance teams की जो characteristics हैं इन्होंने इसके ऊपर study किया है, right? So this is they have clear roles, they have processes, they have effective communications, and they have a common purpose. So which means कि वो वाली चीजें बात करें जिसपे सारे बात करते हैं. They have more of it because उसके अंदर hierarchy जो है वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं बनी हुई. hierarchy है common goal achieve करने के लिए. So that is something that I think that you guys should read. There are बहुत सारी चीजें हैं because if you like this presentation, you can actually just go through it. And if you want me to find some nice books for you, I can also do that. And बहुत मजे की बातें हैं. ये देखिए मैं रुक नहीं सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है. And but again, if you want to read, there's a lot of reading in this. These are extracts from articles. Let me just take you to the last slide, meetups. You can probably kill me later. The key takeaways from this session is that soft skills are you're likely to already have soft skills from your school and work experience, but you can develop them further through training, through through practice. ये कोई ऐसी चीज नहीं है. And then again learn from the best. High performance teams आपके organizations में होती हैं, उनको देखा करें, अपने छोटे छोटे notes बनाया करें. And then interviews में be nice. People want to hire nice people. They don't want to hire grumpy people, or genuine ho aap, and that will really take you places. And again, thank you very much, guys. I hope I made some sense to you, if not all. And if you have any queries, you can always email to me. I'll share that with the team, and then we can have a discussion in the future. Thank you very much. Thank you very much for that very informative session. हम ऐसा कर लेते हैं कि आपकी ये presentation हम सारे अपने candidates को email कर देंगे, participants को. So like if anybody has some other questions, so they can go through the
presentation. I think that's pretty self-explanatory because the content was very, very nice. I hope all of you had a great time at the session. There are a lot of people that are saying thank you to you. So there's that. So you did a really good job. There's that. So yes, the presentation will be forwarded to all of the participants. और इसके अलावा ये वाला session हम बाद में आपके लिए available होगा on Facebook and YouTube as well. So there is that. इसके अलावा इसकी हम एक insights की posts भी लगाते हैं. So if you did miss out on something or if you want somebody to refer to the content that we discussed today, तो आप उस पे भी refer कर सकते हैं. Thank you so much for joining us and we'll see you in the next session.